Okay. Hi, welcome to Competitive Triple B. Hello, hi, welcome to Competitive Triple B. Okay. So all of you, good evening. Mahesh, good evening. Gayatri, good evening. Preeti, good evening. Hi, welcome to Competitive Triple B. सो सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग जल्दी से आ जाओ जो आना है लाइक करो चैट बॉक्स में आते चलो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे जो भी आएगा लाइक करके चैट बॉक्स में आते चलो ठीक है सो फर्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग ठीक है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आओ सो फर्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग ठीक है सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 15 + 3 मल्टीप्लिकेशन 4 - 2 ठीक है सो 15 + 3 मीन्स 15 + 3 multiplication 4 - 2 means 27 - 2. Okay, so 25 is your answer. So 15 plus 3 multiplication 3 multiplication 4 minus 2. Okay, so 3 4s are 12 Bodmas rule. So plus 15. Okay, so minus 2. So 27. 27 minus 2 is 25 is your answer. Okay, first question 25 is your answer. Next question. So Gayatri, first question 25 is your answer. Next question, okay. Next question is second question 18 divided by 3, okay. So 18 divided by 3 plus bracket 24 by 4, 4 6 are, okay. So 3 6 are 18, 6 plus 6 is 12, okay. So your answer is option number B. Option number B is your answer, okay. Next question. Question number 3. Question number 3 is 5 square. Okay, so 5 square means 5 into 5, 25. Okay, 3 square means 3 into 3, 9. 4 square means minus 16. 4 into 4, 16. 25 plus 9 is 34 minus 16. Okay, so 14 minus 6 is 8. Okay, so 2 minus 1 is 1. Your answer is 18. Okay. So your answer is third question 18 your answer. Next question. सो जो आ रहे दोस्तों लाइक करो चैट बॉक्स में आते चलो सो ఎవరైతే వస్తున్నారో అందరూ సో మ్యాథ్స్ के लिए कोई లాంగ్వేజ్ नहीं है ठीक है సో మ్యాథ్స్ కోసం ఏ లాంగ్వేజ్ ఉండదు త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి ఎవరైతే వస్తున్నారో లైక్ చేసి చాట్ బాక్స్ రండి సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 7 మల్టిప్లికేషన్ 8 డివైడెడ్ బై 4 ప్లస్ 5 ఓకే సో 4 4 2s are 8 okay 7 2s are 14 plus 5 19 is your answer first option A. So A is your answer 19. Next question okay so next question is fifth question 19 is your answer next question okay so next question is fifth question okay so fifth question what 100 minus of 20 plus 30 okay so 100 minus of 20 plus 30 multiplication 2 so 20 plus 30 is first bracket okay so 50 so 100 minus 20 plus 30 is 50 50 multiplication 2 so 50 multiplication 2 is 100 okay so 100 minus 100 is 0 so your answer is 0 okay your answer is 0 next question क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है यहाँ पे स्क्रीन क्या प्रॉब्लम चल रहा है सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ सिक्स्थ क्वेश्चन ओके सो सिक्स्थ क्वेश्चन में आओ यहाँ पे sixth question is 2 by 3 plus 1 by 6 okay
So 2 by 3 plus 1 by 6. Okay. So LCM is biggest number 3. 3 multiply 2. Okay. So LCM is 6. 3 2s are 6. 2 2s are 4. 4 plus 1. Okay. So 5 by 6 is your answer. Option number C. Okay. So option number C is your answer. Next question. 7th question. Next 7th question. Okay. So 5 by 6 is your answer. 7th question is 0.5. So 0.5 plus 0.25 multiplication 4. Okay. So 0.25 multiplication 4 is 1. Okay. So 1 plus 0.5 is 1.5. Okay. So 1 plus 0.5 is 1.5. Your answer is 1.5. Okay. So next question. Okay. Next question is 8th question simplification. Next question. 8th question is what? 9 divided by 3. 9 divided by 3 multiplication 2 plus 1. Okay. 3 3s are 3 2s are 6 plus 1 is 7. Your answer. So next question. Okay. 9th question. So 7 is your answer. Next 9th question. 9th question is 12 minus 4. Okay. So 12 minus 4 is divided by 2 plus 6. Okay. So 12 minus 4 is. सो जो आ रहा है दोस्तों लाइक करो चार्ट बॉक्स में आते चलो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ What is your next question is 12 minus 4. 12 minus 4 is 8. 8 divided by 2 plus 6. Okay. So 2 4s are 4 plus 6 is your answer is 10. 10 is your answer. 9th question. So next question. 10th question. Okay. So 9th question your answer is 10 is your answer. Next question. So next question is 4 multiplication 5 plus 3. Okay. 4 multiplication 5 plus 3 minus 10. Okay. So 5 plus 3 is 8. Okay. So 4 into 8 minus 10. So 4 8s are 32. Okay. Minus 10 is 22 is your answer. Okay. So Srinivas, welcome. So next question is 22 is your answer. Next question. Okay. So 11th question. 11th question what? 1 by 4 plus 2. 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 8. Okay. So biggest number 4 2s are 2 4s are. So LCM is 8. Okay. So 2 4s are 4 1s are 4 minus 8 1s are 1. Okay. So 6 minus 1 is 5. Okay. 6 minus 1 is 5. So 5 by 8 is your answer. Okay. 5 by 8 is your answer. So next question, 12th question. So 12th question. So 12th question is 0.75. Okay. So 0.75 multiplication 8 plus 2. Okay. So 0.75 into 8. Okay. So 0.75 into 2 is 1.5. Okay. So 1.5 into 4 is 6. Okay. So 6 plus 2 is 8 your answer. Okay. So 6 plus 2 8 is your answer. Hema, welcome. So next question. So next 13th question. 13th question. Okay. सो जो भी आ रहा है लाइक करो यहाँ पे चैट बॉक्स में यहाँ पे इतना लोग है यहाँ पे 3 ही शो कर रहे भाई सो यहाँ पे जो आ रहा है बाहर आउट मत हो ठीक है उससे क्या होगा आप लोग आउट ही रहेगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 4 ओके यहाँ पे क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लिकेशन 2 ओके सो 4 से 4 टाइम्स कटेगा यहाँ पे 9 प्लस 9 मल्टीप्लिकेशन 2 इज 18 so 18 plus 4 is your answer is 22 okay so next to 14th question okay so यहाँ पे श्रीनिवास रो चला गया क्या यहाँ पे
So यहाँ पे 14th question 25 minus 15. Okay, so 25 minus 15 is 10. Okay, so 10 multiplication 3 is 30 plus 5. Okay, so 30 plus 5 is 35 is your answer, option number A. So next question. Okay, so गायत्री कहाँ गया? गायत्री. So next to 15th question. Okay, so 15th question is what? 3 by 5. Okay, so 3 by 5 multiplication 5 by 3 plus 1 by 2. Okay, so what is 3? 5 5 cancel, 3 3 cancel. Okay, 1 plus 1 by 2. Okay, so LCM is 2. So 2 ones are 2 plus 1. Okay, so 3 by 2 means, so 2 ones are 2 1, so 2 5s are 10. Okay, so answer is 1.5. Okay, so next question answer is 1.5. 15th question answer is 1.5. Naresh ka, Happy ka, Mahesh ka. So well, so next question 0.4. Okay, so 0.4. So next question is 0.4 plus 0.6. 0.4 plus 0.6 multiplication 5. So 5 6 are 33. So plus 0.4. So 3.4. Okay, so your answer is 3.4. Next question 16th question answer is 3.4. So next question. So Emma correct answers, Preeti correct answer, Mahesh correct answer, Gayatri correct answer. Next question is 20. So यहाँ पे 20 है. 20 divided by 4 plus 1 means 5 multiplication 3. Okay, so 5 4s are. Okay, so 4 3s are 12. So your answer is 12. Okay, so first is bracket, फिर division, फिर multiplication. Okay, so 5 4 plus 1 is 5. 5 4s are 4 3s are 12 is your answer. Next question. So next question. Okay, so next question is 7 square. 7 square means 49. Okay, so 7 square means 49. Okay na? So minus 25 plus 4. Okay, so 49 plus 4 is 53. Minus 25 means 13 minus 5 is 8. Okay, so answer is 28. So next question answer is 28. Okay, so next question is 19th question number. So 19th question number is 2 by 7. Okay, so 19th question number is 2 by 7. So 2 by 7 plus 3 by 14. Okay, LCM is biggest number. 7 2s are 14. Okay, 14 2 2s are 4 plus 14 1s are 1 1 3s are 3. So 7 by 14. So 7 by 14 means 1 by 2. Okay, so your answer is 1 by 2. So next question. Okay, so your answer is 1 by 2. Next question. So 0.9 multiplication 10 minus 5. Okay, so 0.9 into 10 is 9 only. Okay, so 9 minus 5 is 4. Okay, so your answer is what? 4. So next question 21 question number. Okay, so 21 question number what? 18 plus 2. 18 plus 2 is 20. Okay, so 20 divided by 5 4. Okay, so multiplication 2. First is bracket, next division. Naresh, welcome. So first is bracket. Okay, so next division, next multiplication. Okay, so 18 plus 2 is 20. Okay, सताना शुरू कर दिए फिर से. So 20 divided by 5 multiplication 2. Okay, so 5 4s are 4 2s are 8 is your answer. Okay, next question.
नेक्स्ट 22 क्वेश्चन नंबर, सिंप्लीफिकेशन आज खत्म होने वाला है, कम ही लिया था। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 22। So 22 is 4 multiplication 6 minus 3 multiplication 4 plus 2. Okay, so 4 6 are 24 minus 3 4s are 12. Okay, so plus 2. Okay, so 24 plus 2 is 26 minus. So Gayatri and Hema answer. So next 26 minus 12. So 26 minus 12 is 14, your answer. Okay. So 22 question number is 14, your answer. Next 23rd question number. Okay. So 23rd question number. So 23rd question number is. So 23rd question number 1 by 3. Okay. So 1 by 3 plus 2 by 3. 1 by 3 plus 2 by 3 plus minus 1 by 6. Biggest number 3 2s are 6. LCM is 6. Okay. So 2s are 3 2s are 6. 3 2s are 2 2s are 4 minus 6. 6 1s are 1 1s are 1. Okay. So 6 minus 1 is 5 by 6 is your answer. Okay. Option number 6. Blur आ रहा है सर. ओके. सो कल बढ़ा के रिचार्ज करता हूँ, इससे ज़्यादा क्या होगा. आज एडजस्ट कर लो. सो ओके, ఈరోజు అడ్జస్ట్ పన్నండి. ఓకే, రేపు రీఛార్జ్ ಮಾಡಿ. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 24th క్వశ్చన్. ఓకే, so 24th question is 0.24. okay, so 5 by 6 is your answer. సో నరేష్ నీకు కూడా బ్లర్ వస్తుందా వీడియో? సో అందరికి బ్లర్ వస్తే ఇప్పుడు రీఛార్జ్ చేద్దాం వేరేది, ఎందుకంటే బ్లర్ వస్తుందంటే స్పీడ్ తక్కువ ఉన్నదని అర్థం రీఛార్జ్. సో ఎవరెవరికి బ్లర్ వస్తుంది చెప్పండి వీడియోలో, కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి త్వరగా. 0.25 multiplication 16 plus 4. okay, so 4 is 1, so 16.25 means 4. okay, so 4 plus 4 is 8. okay, 8 is your answer. so ఎవరికైనా బ్లర్ వస్తుందా? किसी को ब्लर आ रहा है तो बताओ यहाँ पे. गायत्री के अलावा किसी को ब्लर आ रहा है तो यहाँ पे आंसर करो चार्ट बॉक्स में फटाफट. गायत्री के अलावा किसी को ब्लर आ रहा है क्या? सो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज 25th क्वेश्चन? सो 25th क्वेश्चन इज 9 divided by 3 plus 12 divided by 4. okay, so 3 multiplication 3 4 3s are 12, 3 plus 3 is 6, your answer. so next question 26. okay, so next to 26th question. okay, ओके, सो लाइट ब्लर आ रहा है तो वेट करो 2 मिनट. ओके, सो यहाँ पे गायत्री और प्रीति को ब्लर आ रहा है बोल रहे हैं वीडियो में. सो मैं रिचार्ज करता हूँ 2 मिनट रुकना ऑनलाइन. इसमें रिचार्ज करने से कुछ हो सकता है. ठीक है, आप लोग तब तक ये 26th क्वेश्चन करो, देखते हैं. ब्लर हटा देंगे हम लोग.
सो यहाँ पे आंसर क्या हुआ बताओ। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 30 माइनस 10 मीन्स 20, 20 मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस 5, ओके। सो 40 प्लस 5 मीन्स 45 is your answer, okay। Next question, so 27th question, okay। So 45 is your answer। Next question, okay। सो कर रहा हूँ अभी रिचार्ज, एक सेकंड रुक जाओ, अभी कर लेंगे, ठीक है। सो हो जाएगा, देखते हैं, एक बार करके देख लेते हैं, अगर उधर भी रिचार्ज से हो गया तो ठीक है। आप लोग करो तब तक, इसको सॉल्व करो। अभी आ रहा है ठीक ही, अब तो ठीक ही आ रहा है मेरे, देख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8, ओके। सो 5/8 मल्टीप्लिकेशन 8/5 प्लस 0.5, ओके। So 8 8 cancel, 5 5 cancel, 1.5 is your answer। Next question, okay। So next to 28th question, okay। So 1.5 is your answer, okay। अभी मार दिया, देखते हैं, रिचार्ज कर तो दिया क्या। So next question, so next question is 0.6, okay। So 0.6 plus 0.4 multiplication 10, okay। So means 0.6, 0.4 multiplication 10 means 4, okay। So 4.6, okay। So ఎప్పుడైనా 0.6 multiplication जो भी 0.6 into 0 means 1 change, okay। So point is, so next question is, your answer is 4.6, 28th question। So next question, okay। So next question, हेमा, प्रीति, गायत्री, हम सब लोग आंसर दो यहाँ पे, महेश। So next question यादव। So next is 29th question, okay। So 24 divided by 6 multiplication 3 minus 4, 6 4s are 4 3s are 12 minus 4 is 8 is your answer। so अभी हम लोग 4 दिन बंद करेंगे, ठीक है, डेली शाम वाला स्पीड मैथ्स, ओके। सो 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/2। आप लोग भी हाजिर हो जाना SBI मेंस क्लास में, कल से पूरा SBI मेंस का क्लास करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 2 2s are, so -2 means 4 minus 2 is 2/4, 1/2 is your answer, okay। 30 question is C answer। Next question, okay। So simplification is over। so कल से हम लोग क्या करेंगे, मेंस का क्लास करेंगे, ठीक है। सो इवनिंग टाइम मेंस का क्लास करेंगे, आप लोग भी आ जाना, क्वांट रखेंगे इवनिंग, ओके। సో ఈవినింగ్ క్వాంట్ చేద్దాం ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ। సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ 25% ఆఫ్ 320, ఓకే। సో 1/4 మల్టిప్లికేషన్ 320, సో 4 8s, ఓకే। సో ఆన్సర్ ఈజ్ 80, ఓకే। సో 25% ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఈజ్ 1/4, ఓకే। సో 25% fraction value is 1/4। Next question is 32 question number, okay। So 32 question number, what ratio, okay। ratio का क्या है, 2:5। ratio is 2:5। first part is 10, so what is second part, okay। so what first part is 10, what is second part, okay।
So what is second part? Tell me answer fast, okay? So first part is 10. So first part is 10 means 10 by 2, okay? So 10 by 2 means one ratio value is 5, okay? So 5 5s are 25 is your answer, okay? So option number C, 25 is your answer, okay? So next question. So 2 is to 5, okay? So first part is 10. So first part is 10 means 10 by 2. So one ratio value is 5, okay? So 5 ratio value means 5 into 5, okay? So 5 into 5 is 25 is your answer, okay? Next question. So next question is average, okay? So average is what? 6, 8, 10, 12, 14, okay? So 6, 8, 10, 12, 14, okay? So सब में दो गैप है, दो दो 2 digit gap. So center number is average 10, okay? So average what? 10, okay? Sorry. So next question. 34 question number is profit loss. So profit loss question what? 200. So selling price is 250. So profit is 50. So profit percentage equals to, okay? So profit percentage equals to profit by CP into 100, okay? So what is profit? Profit is 50. So CP is 200 into 100, okay? So 100 2 times 2, 25 times. So your profit percentage is what? 25%, okay? So what profit percentage is what? 25%, okay? So next question, simple interest question, okay? So simple interest question what? SI, simple interest rupees 500 at 6% per 2 years, okay? Per 2 years. So 500 6% per 2 years. So 6% means double zero cancel. Double zero cancel. 6 5s are 30. 32s are what? 60. Okay. So 2 years interest is 60 rupees. Okay. 2 years interest is 60 rupees. Okay. So next question, time and work. Time and work question. So 4 men in 5 days. Okay. What is 8 men work? So 4 men in 5 days means 20 members, okay? Total workers 20 members, okay? So 4 men 5 days. So 4 into 5 is 20. So Krish, welcome. So 4 into 5 is 20. 20 divided by 8 means 2.5 days, okay? So 2.5 days is your answer. Next question. कभी कभी ये बोर्ड भी काम नहीं करता. 4.5 is 20. 20 divided by 8 means 2.5 days, okay? So next 37 question number, okay? So 37 question number. So 37 what? Speed 60 km per hour, distance 180, okay? So what is time? Time equals to distance by speed, okay? So distance कितना है यहाँ पे? 180 divided by 60. So 6 3s are 18, okay? So 3 hours is your answer. So next question, 3 hours is your answer. Next question. So next question is 38, okay? So 38 is algebra. So algebra क्या है? 2x plus 3 equals to 9. What is find value of x, okay? So 2x plus 3 equals to 9. What is x value, okay? So 2x equals to 6. So x equals to what? 3, okay? So 2 3 is a 6. So value is 3.
Next question 39th. Okay. So 39th question. Okay. So 39th question, what milk and water is 4:1. Okay. So milk water. So milk water is 4:1. So next 4:1. So water added to make 3:2. Okay. So what is the fraction is milk? Milk water in 4:1 ratio. सो 4 लीटर 1 लीटर मानेंगे तो वाटर को 3:2 करना है यहाँ पे. वाटर एडेड टू मेक 3:2. So possible, tell me, 3/5, what is the fraction of milk? What is fraction of milk? Milk water 4:1 ratio, water added to 3:2 make 3:2. What is the fraction of milk? So total ratio 5. Okay. So 3/5, 2/5. So 1 ratio 3. So tell me first answer. Three by five. Milk and water in 4:1. Okay. So 4:1, water added to make 3:2. Okay. So what fraction is milk? So answers. What answers? ఓన్లీ ఎవరు ఒకళ్ళు ఇస్తున్నారు, ఎందుకు మిగిలిన వాళ్ళు ఏది ఆన్సర్? So answer is very simple. Yadav correct answer. Okay. So बाकी सब आंसर B is answer. Okay. सो टोटल रेशियो वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है. ठीक है. सो टोटल रेशियो वैल्यू 5 है. 3 पॉट्स है मिल्क का. सो आंसर क्या होगा, आप लोगों का मिल्क का पूछा है तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे सारे आंसर नहीं दिए अभी तक. सो प्रीति और कौन कौन, महेश, सो जो है सबका आंसर नहीं आया अभी तक. सो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर, फादर्स एज इज 3 times sons sum 48. Okay. Son's age. Okay. So father's age is 3 times of son's age. Okay. So total part is 4 times. Okay. So total part is 4 times. 48 is 4 times. Okay. So 4 12s are. So father's age is 36. So one ratio value is 12. Okay. So son's age is what? 12. Okay. So next question. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो जो आ रहा है दोस्तों लाइक करो, चैट बॉक्स में आते चलो. सो नेक्स्ट परसेंटेजेस इंक्रीज 200/20%. ओके. सो 20% मीन्स फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/5. ओके. सो 200 multiplication 20%. Percentage 00 cancel. 22 is a 40 increase. Okay. So 40 plus 200. Okay. So answer is 240. Okay. So option number C 240 is correct answer. Okay. So next question. Next question, what divided 100 ratio 5 ratio. Okay. So total ratio how much? 3:2. Okay.
So 100 divided by 5 means 520s. Okay. So your answer is 20. So large part पूछा है यहाँ पे. So 3 multiplication 2. Okay. So large part is what? So one ratio value is 20. So largest part value how much? 3 multiplication 20. So equals to 60. So answer is 60. Okay. So next question, option number C. Okay. Option number C is your answer. So next 43 question number. Okay. So average question 43 is 10, 15. So 10, 15, 20, 25, 30. Okay. So 5 gap, 5 gap, 5 gap, 5 gap. Okay. So biggest middle number is your average. Okay. So same gap enough, middle number is your average. Okay. Next question. So middle number is your average, 20 is your average. Okay, next question. So 20 is your answer. Next question is 300. Selling price is 300. Okay. So loss 10%. So 10% loss means 1 by 10. Okay. So 0, 0 cancel. 30 rupees loss. Okay. So how much cost? Profit loss. Selling price is 300. So loss means 330 is cost price. Okay. So cost price 330, selling price is 300. Okay. So minus 30 rupees loss. Okay. So what is cost price? 330. Okay. So जब cost price ज़्यादा ही होगा तब जाके loss होगा ना, selling price कम है. So यहाँ पे selling price 30 rupees loss है. Next question. Okay. So next question is, so compound interest 1000 at 10% 2 years. Okay. So compound interest 1000. Okay. 10% 2 years. So 2:1 ratio. Okay. 1000 2:1 ratio. 10% means 100. So your answer is what? 210. Okay. So answer what? 210. So next question. So 1000. Okay. So 1000 10% means 1 by 10. So 2:1 ratio. So 100 is 100. 100 की 10% अंटे यहाँ पे कितना है? So 10 है. So यहाँ पे 200. 100 multiplication 2 is 200. 10 multiplication 1 is 10. Okay. So your answer is 210. Next question 46 question. Okay. So your answer is 210. Next question is 46 time and work question. Okay. So time and work question, what? A does work in 6 days. Okay. So A does work in 6 days, B in 9 days. Okay. So A does work in 6 days. Okay. A does work in B 6 9. Okay. So LCM is 9 18. Okay. So 6 3s are 9 2s are. So 5 3s are 15, 3 5 6 are. So 3.6 days. Okay. Not 4.6 days. 4.5 nakko 3.6. Okay. Answer is 3.6 days. Okay. Next question. Next question is 47. Okay. So two trains 100 meter each speeds 50 60 kilometer per hour relative speed. Okay. So what is relative speed? Two trains 100 meter each speeds 50 and 60 kilometer per hour relative speed.
So relative speed means क्या है? Speed train 1 plus speed train 2. Okay. So what is your train speed? Relative speed. Speed train 1 minus train 2. So 60 minus 50. So how much your train speed? 10 kilometer per hour. So relative speed answer, tell me fast. 10 kilometer per hour. Gayatri 120. 100 meter kilometer to change. So 360 kilometer. Okay. So 360 kilometer total distance to. So 50, 60. So relative speed is 60 minus 50. Okay. So 10 kilometer per hour relative speed. Okay. So relative speed means train 1 speed minus 2 trains 100 meter each, speeds 50 and 60 kilometer per hour. Relative speed. सो यहाँ पे क्या होगा आंसर 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है. सो ट्रेन सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर होगा. ओके. सो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन भी ढंग से नहीं दिया. 2 ट्रेन 100 मीच मीन्स अपोजिट डायरेक्शन हो तो यू का रिलेटिव स्पीड क्या होगा 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे आप लोगों का आंसर क्या है यहाँ पे 110 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है. एक तो एडिशन होगा ये तो सब्सट्रैक्शन. ओके. सो आंसर क्या हो गया आप लोगों का 110 किलोमीटर पर आवर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question, okay. So algebra next question is x by 2, okay. So x by 2 plus 3 equals to 7, okay. So what is x value? So LCM is 2. So x plus 6 divided equals to 7. X plus 6 equals to 14. X equals to 14 minus 6 means 8 is your answer. Okay. So next question, 8 is your answer. Next question. Okay. So next 49 question. Okay. So 49 question is alloy 70% gold. Okay. So alloy 70% gold, add 30% gold to make 8%. To how much added? Okay. So जल्दी से बताओ यहाँ पे आंसर जो आ रहे हैं दोस्तों लाइक करो. Alloy 70% gold, add 30% gold to make 80%. How much added? సో ఈ క్వశ్చన్ మన దాంట్లోంచి లేదు అసలు. శ్రీనివాసరావు 2:1.
So next, సో ఇక్కడ మనకి 70 ప్లస్ यहाँ पे देखो 1.0 అనుకుంటే మనం టోటల్ 100% కదా. సో 1.0x అనుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, यहाँ पे क्या होगा बताओ यहाँ पे. సో 1.00x ప్లస్ 0. మనకి 70% మీన్స్ 70. సో 30% goal to make 30 minus x equals to 0.80. okay. So 0.80 into 30 सॉल्व करो इसको. सो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 30 इंटू 7 मीन्स 0.70 मीन्स 21 हो जाएगा. यहाँ पे 0.70x हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 30 इंटू यहाँ पे कितना होगा 24 हो जाएगा. ठीक है. सो आप लोगों का रेशियो क्या होगा यहाँ पे बताओ. यहाँ पे रेशियो होगा आप लोगों का, सॉल्व करो, यहाँ पे 3:1 हो जाएगा. यहाँ पे क्या होगा रेशियो आप लोगों का 3:1 हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे रेशियो क्या होगा 3:1 होगा. ठीक है. सो यहाँ पे सॉल्व करने से क्या होगा, ये 24 मतलब यहाँ पे इधर ले जाओ 21 हो जाएगा. यहाँ पे माइनस मतलब 3 बचेगा. ठीक है. सो 3 बचेगा ना यहाँ पे. यहाँ पे कितना बचेगा हम लोगों को, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था ना हम लोग, तो कितना बचेगा हम लोगों को टोटल. यहाँ पे टोटल में x इक्वल्स टू 3 यहाँ पे 70 माइनस यहाँ पे 0.30 होगा. ठीक है. सो टोटल वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को 10. ओके. सो 3:1 रेशियो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे 3:1 रेशियो. So next question is age after 5 years is 2 times now current age. Okay. यहाँ पे next question. question number. Okay. Age after 5 years is 2 times now current age. So फटाफट आंसर करो. क्या होगा यहाँ पे एज आफ्टर 5 years. ओके. सो एज आफ्टर 5 years इज 2 times now. सो 2 times now मीन्स अभी का एज कितना होगा 5 years होगा, तो आफ्टर 2 years आफ्टर 2 times. ओके. सो 5 years के बाद 5 + 5 इज 10 हो जाएगा. यहाँ पे 5 + 5 मीन्स 10 हो जाएगा. ठीक है. सो एज इज 5 हो जाएगा आंसर. ठीक है श्रीनिवास. यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का आंसर 5 हो जाएगा. ठीक है. सो अभी एज इज 5 years. ओके. सो आफ्टर 5 years इज 2 times मीन्स 10 हो जाएगा, मतलब 5 2s are 10. सो आंसर इज योर्स 5 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 51. सो 5 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51. 40% of 150. ओके. So 40% of 150 means 2/5. 40% value, fraction value is 2/5. Okay. So नहीं है तो percentage 00 cancel. Okay. So 40% into 150. The percentage 00 cancel. 4 15s are 60 is your answer. Okay. So answer is yours 60. Next question. So answer is 60. Okay. So next question. Next question is 52.
52 what ratio? 4:7. Okay. So total is 99. Okay. Largest part what? Okay. So 4:7. Okay. 4:7 means total ratio value is 4 plus 7 means 11. Okay. So 11 means 99 divided by 11 means 11 nines. So largest part is 7 ratio, 7 nines are 63. Okay. So what is your answer? Option number B, 63. Okay. So next question. So answer is 63. Okay. Next question. So next question is average of 7. Okay. So average of 7 numbers is 12. So 7 multiplication 12, 12 sevens are 84. Okay. So average of यहाँ पे एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 84. ओके. सो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मीन्स सो कल से ट्रेन का प्रॉब्लम्स ज़्यादा लेके आएंगे क्योंकि ट्रेन में हम लोग अकड़ गया ना यहाँ पे आज. सो यहाँ पे कल से हम लोगों को जो जो चैप्टर के कम आ रहे हैं उनको कल ज़्यादा लेके आएंगे. ठीक है. प्रॉफिट लॉस को बंद करेंगे, इंटरेस्ट को बंद करेंगे. यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? यहाँ पे 50 रुपीज़. ओके. सो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कितना है? 50 रुपीज ऑन 500. ओके. सो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ 50? सो मीन्स व्हाट? सो टेल मी 10%. ओके. सो व्हाट इज 1/10 मीन्स 50 रुपीज. ओके. सो 1/10 इज 50 रुपीज. यहाँ पे 10%. ओके. फ्रैक्शन वैल्यू इज 10%. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्वेश्चन नंबर. ओके. So 55 is simple interest rate principal for SI 125 years 5% per 3 years. Okay. So PRT by 100. So total principal amount into ratio rate of interest and time. Okay. So what is your answer? 120 into 5%. Okay. So 120 यहाँ पे सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का 120. ओके. 120 मल्टीप्लिकेशन 5% 3 years. ओके. सो 0 0 कैंसल 5 2s are 10. ओके. सो 2 6 सो 6 3s are सो हम लोगों को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है. सॉरी. यहाँ पे क्या हुआ आप लोगों का आंसर 800. ओके. सो 800 5% मीन्स 40. सो 1 year 40 120 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. ओके. सो 800 इज करेक्ट आंसर. ओके. प्रिंसिपल अमाउंट पूछा हम लोगों को यहाँ पे 800 करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. सो 800 5% 3 years. ओके. सो 120. Okay. So 120 means per year is 120 divided by 3 is 40. Okay. So 40 is how much in 5%. Okay. So same answer यहाँ पे. So next question 56. Okay. So 56 time and work. A fills 4 hours, B 6 hours together. Okay. So यहाँ पे together means LCM is 12. So 4 3s are 6 2s are. So 5 by 12 by 5. Okay. A fills 4 hours, B fills 6 hours. Efficiency. So LCM is 12, 4 3s are 6 2s are 5 12, 5 2s are 10. Okay. So 5 4s are 2.4 hours is your answer. Okay. So what is your answer? 2.4 hours. Okay. So next question 57. Okay. 2.4 hours is your answer. Next question. Okay. So next question what? 360 kilometer by 60 kilometer per hour. So total hours what? 6 kilometer 6 hours is your time. Okay. So 58th question. Okay. 6 hours. Okay. So next question. So next question is 3x minus 5 equals to 10. What is the x value? Okay.
3x equals to 10 plus 5, so x 15, okay, so 3 5s are, so value of x is 5, okay, so value of x is 5. Answer next question. So next question is 59th, okay, mixture solution 60% acid and water to make 40%, what is ratio, okay, so what is ratio? 3 is to 2, okay, 60 is to 40 means 23s are 22s are, so ratio is 3 is to 2. So next question, okay, ratio is 3 is to 2. Next question. So next question is ages of mother is 30, son is 5, ratio after 10 years. So after 10 years what? 40, 15, okay. So 5 3s are 5 8s are. So what is ratio? Ages mother 30, son 5, ratio after 10 years, okay. So ratio after 10 years is what? 8 is to 3. So 8 is to 3 ratio. So next question, okay. So 8 is 3 ratio. Next question is. So next question 61. Okay. So 61 is decrease 300 by 15%. Okay. So 15 3 is a 45 decrease. So what happened to 55? Okay. So answer is D option. So answer is D option 255. Okay. So 300 percentage decrease 15. Okay. So decrease is value 45. 300 minus 45 means 255. Okay. So what is your answer? So 255 is your answer. Next question. 300 minus 15 percentage means percentage double zero cancel. Okay. So 15 multiplication 3 is 45. Okay. So 300 minus 45 means 255 is your answer. Okay. So next question. So next question is ratio 5 is to 3, sum 80. Okay. So ratio 5 is to 3, sum 80, small pot. Okay. So what is small pot? Total ratio value is 8. Okay. So total ratio value is 8. So 80 divided by 80 means 8 means one ratio value is 10. Okay. So smaller pot means 3 multiplication 10. Okay. So your answer is 30. Okay. So smaller pot is 30, your answer. Nice. So your answer is 30. Next question. 63 question number. Okay. So what is the C? Option number C is your answer. 13. Okay. So option number C is your answer. Next question. 64th question. Profit and loss. Okay. So loss 40 and 400. Okay. सो 400 के ऊपर 40 लॉस हो गया, मतलब 360 बच गया. सो परसेंटेज पूछ रहे हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 10%. ओके. सो 400 में 40 कितना परसेंटेज है हम लोगों का? 40 कितना परसेंट है आप लोगों का? 10%. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे 40 आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100. सो 4 times 4 10 times. ओके. हाउ मच परसेंटेज? 10%. ओके. सो यहाँ पे 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन 65. ओके. सो 65 क्वेश्चन नंबर. What is 65 question number? 65 is compound interest 2000. Okay.
So 2005% per 3 years. Okay. So compound interest. Okay. So compound interest means 3 is to 3 is to 1. Okay. So percentage double zero cancel 25 is 100. So 100 means 300 हो जाएगा फर्स्ट ईयर यहाँ पे 100 का 5%. ओके सो 100 का 5% means what? So 5 rupees. So 5 3 is 15 हो जाएगा. So 5 का कितना परसेंट? 5%. So 5 का 5% means 25 by 100. So means 1 by 4 means 0.25. Okay. So your answer is 315.25. So nearest value is 315 is your answer. Okay. So compound interest how much? 315.25, but 315 is your answer. Next question. समझ गया? So next question is time and work. Okay. So time and work is 5 workers in 10 days, 10 workers in how much? Okay. So 10 workers in how many days? So 5 into 10, 50 members work in 1 day, 10 days. Okay. So 5 workers in 1 day, so total 50 members. Okay. So 10 workers, so 50 by 10. So 5 is your answer. Okay. So 5 is your answer. Next question. फाइव इंटू 10. ओके समझ गया ना? कभी कभी ये चल नहीं रहा. सो एक सेकंड वेट करो. यहाँ पे सबका आंसर आ गया सही है. यहाँ पे 5 days. सो यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते. 67. ओके सो यहाँ पे 67 में आ जाओ. टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड पर ट्रेन अप्रोचिंग 40 एंड 50 किलोमीटर पर आवर. ओके सो यहाँ पे क्या होगा? 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है. 40 प्लस 50 यहाँ पे कितना होगा बताओ? यहाँ पे रिलेटिव स्पीड पर ट्रेन अप्रोचिंग एट 40 एंड 50 किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू 40. ओके स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2. ओके सो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2. ओके सो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 इज हाउ मच? 40 किलोमीटर पर आवर. ओके सो यहाँ पे नेक्स्ट का क्या है? यहाँ पे 50 किलोमीटर पर आवर. सो आप लोगों का आंसर क्या होगा? यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोगों का? 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट सो यहाँ पे x प्लस 4 इक्वल्स टू 12. ओके सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? x प्लस 4 इक्वल्स टू 12. x इक्वल्स टू व्हाट? 8 आंसर. ओके सो यहाँ पे 12 माइनस 4. x प्लस 4 इक्वल्स टू 12. x इक्वल्स टू 12 माइनस 4 मीन्स x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा आपको आंसर. यहाँ पे 68 क्वेश्चन का 8 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So next question. If tea and water is 3:1. Okay. So यहाँ पे tea and water is 3:1. Okay. So यहाँ पे tea water का क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे 3:1. So water is add water 1:1 ratio added. What is ratio added? So 1:1 means 2 ratio added. So 1:3 ratio. Okay. So 1:3 ratio added 4:4. Okay. So 1:1 होगा. So answer is 1:3. Okay. So what is your answer? 1:3.
So next question. Ages brother 10, sister 8. Ratio after 4 years. Okay. So 14 plus 12, 14, 12. Okay. 7, 6 ratio. Okay. So next ratio is what? So आप लोग आंसर देते रहो, जो आ रहा है लाइक करो, चार्ट बॉक्स में आते चलो यहाँ पे. सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ब्रदर का है 10 है, सिस्टर का 8 है. सो यहाँ पे ब्रदर का 10 है, सिस्टर का 8 है. सो यहाँ पे ब्रदर का 10, सिस्टर का 8, रेशियो पूछ रहे हैं हम लोगों को आफ्टर 4 इयर्स. ओके. सो यहाँ पे क्या होगा, 14:12 होगा. यहाँ पे 2 7 2 6. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोगों का, 7:6 होगा. ठीक है. सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया आप लोगों का, 7:6. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. यहाँ पे 7:6 हो गया. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ. परसेंटेज ऑफ 35% ऑफ 400. ओके. सो यहाँ पे परसेंटेज में 00 कैंसिल करो. 35 2 70, 72 कितना है, 140. ओके. सो आंसर इज 140. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पे नेक्स्ट आंसर. ओके. यहाँ पे क्रिस चला गया क्या. सो जो आ रहा है दोस्तों लाइक करके बने रहो यहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ. यहाँ पे रेशियो 72, क्वेश्चन नंबर इज 7:9. ओके. So total is 128. So 7 plus 9 is 16. Okay. So 16 8s are 128. Okay. So one ratio value is 8. Large pot पूछ रहे हैं यहाँ पे. large pot कितना है यहाँ पे, 9 है. So यहाँ पे 8 9s are 72 is your answer. So what is your answer, 72. Next question. Okay. So 72 is your answer. Next question. So 73 question number. Okay. 73 question number what, 12 14 16 18 20. Okay. So 12 14 16 18 20. So 2 is the gap. Okay. So middleest number is your answer, 16. Okay. So average is middleest number is your answer. Next question. Next question is 74. Okay. So 74th question number is selling price for 50, profit 25%. What is cost price? Okay. So 125% value is 125% of x equals to 450. Okay. So 25 5 times. Okay. So 25 ones are. So कितना बचेगा यहाँ पे, 20. Okay. So 200. So 25 88 times. Okay. So 8 times. So 1800 divided by 5. So 5 3s are 15, 5 6 are. So answer is 360. Okay. So cost price is 360. So next is 75 question number. Cost price what, 360. Okay. So next number. So next number what? So simple interest 2200. Simple interest. Okay. Rate for SI rupees 200 on 1000 in 4 years. So each 100 is 50 rupees. Okay. So 200 divided by 4 means यहाँ पे क्या होगा, 200 divided by 4 means यहाँ पे 50 हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे 50 हो जाएगा. यहाँ पे 75th क्वेश्चन का देखो. यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पे 200 है इंटरेस्ट रेट टोटल. सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, 50 हो जाएगा पर ईयर. ओके. सो 1000 से कितना करने से आप लोगों का 50 बनेगा, तो यहाँ पे राउंड फिगर 5%. ओके. सो 00 कैंसिल. यहाँ पे 50 रुपीज मीन्स यहाँ पे 5% पर ईयर. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ. जो आ रहे दोस्तों लाइक करो, चार्ट बॉक्स में आते चलो यहाँ पे.
సో ఎవరైతే వస్తున్నారో లైక్ చేయండి, చాట్ బాక్స్ రండి. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్. ఓకే, సో यहाँ पे ए and B together 8 days. A alone 12 days means B alone. Okay. So total work minus single work. So total work is 1 by 8 days. Okay. So 1 by 8 minus 1 by 12 means LCM what? 24. Okay. So 3s are 2s are. So 1 by 24 means 24 days is your work. Okay. So 24 days is your work. Next question. 24 days is your work. Okay. So next question what? Time and distance. Okay, speed 75 km per hour. Okay, so यहाँ पे 75 km per hour 4 hours. Okay, so 4 hours means 75 into 4 means 75 to the 150, 150 to the 300 km. Okay, so यहाँ पे 300 km your answer. Next question 78. Okay, so next question is 78. So 2x equals to 18. Okay, so यहाँ पे 2x equals to 18. So x equals to what? Okay, so 2x equals to 18, x equals to what? Okay, so 2 9s. So यहाँ पे x का आंसर क्या है आप लोगों का? 9. Next question 79th. Okay, so 79th question. 79th question what? Wine 80% pure, add water to 60%, what ratio? Okay, so what ratio? So tell me first answers. Wine 80% pure, add water to 60%, what ratio? So 80% means वहाँ पे 20% वाटर है ना. यहाँ पे पहले कितना है हम लोगों को? 80%. ओके, सो यहाँ पे 80% में आप लोग 60% कर दिया. सो यहाँ पे पहले कितना था? 20% है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? 4:1 रेशियो में था पहले. इसको वाटर को 60% कर दिया. यहाँ पे ये कितना हो गया था? 40 हो गया. सो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का रेशियो? यहाँ पे 2:3 हो जाएगा आप लोगों का रेशियो. ओके, सो यहाँ पे वाइन का रेशियो 2 होगा, वाटर का रेशियो 3 होगा. ठीक है, यहाँ पे 2:3 होगा. ठीक है, सो यहाँ पे आंसर क्या होगा आप लोगों का? 2:3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. So next 80 question number. Okay, so next question में आओ. यहाँ पे next 80 question number. Okay, question number is father age 40, son age 10 after 10 years. Okay, so after 10 years what is ratio? 20 plus 50. Okay, so 20:50 means 5:2 ratio. Okay, so 5:2. Next question. Okay, so next question what? 105 5:2. Okay, so next to 81 question number 55% of 200. Okay,
So percentage 00 cancel, 55 2s are 110. Okay, so answer is 110. 110 is your answer. So next question. Okay, so what is next question? Ratio 6 is to 5. Okay, so 6 is to 5, 121. So 60 is to 5 means 6 plus 5, 11 ratio. 11 11s, one pod is 11. Okay, so one ratio value is 11, largest pod is 6 into 11, 66 is your answer. Okay, so 82 question number is 66 is your answer. Next question. So next question, gap is 2. Okay, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 12 plus 2 14. So numbers is 6. So total 78. So 12 is your answer. Okay, कितना हो गया? 78 है ना. So 336. So 13 is your answer. Okay, so next question. So next question is 84th question. 84th question, cost price 600, 20% loss. Okay, so 20% loss means 120 loss. Okay, so 120 loss. Okay na, so 20% means percentage 00 cancel, 26 are 120. So 600 minus 120 means 0, 60 minus 12 means 48. Okay, so answer is selling price 480. Okay, so answer is 480. So next question. Okay, what is your next question? Compound interest. Okay, so compound interest is 2:1 ratio. Okay, so 86 होमवर्क कर लो यहाँ पे. सो क्लोज कर देते, बहुत देर हो गया. ठीक है, सो कल से हम लोग मेंस का क्लास करेंगे एसबीआई का. ओके, सो यहाँ पे एसबीआई का मेंस करेंगे कल 4 दिन तक. ओके, 17 को मेंस का एग्जाम है ना उनका. सो यहाँ पे 9 तारीख हो चुका है ऑलरेडी. सो 7-8 क्लास मेंस का करने दो यहाँ पे मेंस का. सो 4-5-7 दिन के बाद फिर से सेम क्लास स्पीड मास का होगा. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो लोग आए उन लोगों को सबको धन्यवाद. ओके, सो यहाँ पे सबको थैंक्स टू ऑल. ओके, सो आप लोगों को थैंक्स टू ऑल. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो. जो बाद में देख रहे हैं उनको भी थैंक्स टू ऑल. ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो दोस्तों यहाँ पे. सो अपना चैनल का नेम है कॉम्पिटिटिव ट्रिपल बी. ओके, सो अपना चैनल का नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव ट्रिपल बी. यहाँ पे बैंकिंग एस्पिरेंट होगा तो उसमें जाके ज्वाइन हो जाना. सो यहाँ पे यूट्यूब के पास अपना लिंक है टेलीग्राम का, कॉम्पिटिटिव ट्रिपल बी बैंकिंग एस्पिरेंट से एक लिंक है. सो उसमें ज्वाइन हो जाना. ठीक है, सो जो जिसको काम में नहीं आ रहा है वो भी वीडियो देखते रहना अपना. ठीक है, सो अपना चैनल अभी ग्रो अप हो रहा है आप लोगों की वजह से, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे उठ रहा है. ठीक है, सो आप लोग सब सपोर्ट करना है. ठीक है, सो गुड. सो थैंक यू टू ऑल. ओके, बाय.